Following laid the foundation of Rashtrakuta Empire. Danti Durga. Danti Durga, founder of Rashtrakuta dynasty around 736 CE, with Manyakheta as the capital. राष्ट्रकूट दंती दुर्गा ने राष्ट्रकूट एम्पायर की स्थापना की. फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी अराउंड 736 CE with Manyakhet as capital. He defeated Chalukya and performed the Hiranyagarbha ritual at Ujjain to legitimize his rule. चालुक्य को हराया और हिरण्यगर्भ का रिचुअल किया उज्जैन में, ताकि अपना वो लोहा मनवा सकें. अमोघवर्ष फर्स्ट ग्रैंडसन ऑफ दंती दुर्गा ruled for 64 years and promoted Jainism. Dhruv, Rashtrakoot king, military commander but not the founder. Krishna first, successor of Danti Durga, known as building Kailash temple at Ellora. Rashtrakoot king. Who out of the following performed a ritual called Hiranyagarbha? Danti Durga, golden worm. Hiranyagarbha was a symbolic Vedic ritual performed by kings to signify a second spiritual birth as Kshatriya. Danti Durga did this to assert independence and divine legitimacy for ruling. Mayur Sarman, founder of Kadamba dynasty, performed Vedic rituals but not this. Harichandra and Hars. Who among the following was born in a military camp in the course of his father campaign? तो अमोघवर्ष राष्ट्रकूट जो है अपने पिताजी के उसमें कैंपेन में ही जन्म हुआ था. अमोघवर्ष फर्स्ट 800 to 878 he born at Sri Bhavan near Narmada during his father Govind III's northern military campaign. Known for religious tolerance, promoted Jainism. Authored Kavi Rajmarg, the first Kannada लिटरेरी वर्क. अमोघवर्ष ने लिखा था कवि राजमार्ग. वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रीनिंग मोनार्क्स इन इंडिया. राष्ट्रकूट. द ग्रेटेस्ट प्रतिहारा किंग वाज मिहिर भोज. मिहिर भोज फर्स्ट मोस्ट पावरफुल गुज्जर प्रतिहारा रूलर. 836 to 885 CE seized Kannauj and made it his capital. Held titles like Adi Varaha and Prabhas. मिहिर भोज को कहा जाता था. Promoted Vaishnavism and was admired even by Arab travelers like Al-Masudi. Al-Masudi ने भी इन लोगों की तारीफ की थी प्रतिहारा की. गुज्जर प्रतिहारा. आदि वराहा और प्रभास, ये किसको कहा जाता था? मिहिर भोज को. आदि वराहा और प्रभास किसको कहा जाता था? मिहिर भोज को. तो द टाइटल आदि वराहा इंडिकेट्स मिहिर भोज डिवोशन टू विष्णु वराहा इनकारनेशन. Inscriptions and coins during his reign frequently bear this title along with Prabhas. Why important for UPSC? What is or not true about King Mihir Bhoj? He was son of Nag first. सेकेंड नहीं भाई, मिहिर भोज उनके पुत्र नहीं थे. कन्नौज वॉज द कैपिटल ऑफ गुज्जर प्रतिहार, सही है. अरब ट्रेवलर और मसूदी गेव हिम द नेम किंग बौरा. किंग बौरा कहा गया इनको, हो सकता है. मिहिर वॉज नॉट द सन ऑफ, ये रामभद्र के पुत्र थे. मिहिर भोज जी रामभद्र के पुत्र थे. ही कैप्चर्ड कन्नौज एंड मेड इट इंपेरियल capital of Pratihara. Al-Masudi, a 10th century Arab historian, visited Gujarat and wrote about Gujjar Pratihara Empire, called Mihir Bhoj as Baura. Mihir Bhoj as Baura, which is believed to be mispronunciation of Adivaraha. Adivaraha or Prabhas. Adivaraha. Khalimpur copper plate, a key inscription showing elective monarch in Pal dynasty. Hiranyagarbha ritual represent a symbolic rebirth into Kshatriya वर्ण. किसने किया? दंती दुर्गा ने.
Vajrayana Buddhism, Tantric form of Mahayana Buddhism, emphasizing at Vikramshila. Manyakheta, capital of Rashtrkut, strategically located in Deccan for trade and defense. Al-Masudi, his travel account are vital primary source of Indian polity, trade and culture from a foreign perspective. Arrange the names of the following historical personalities in correct chronological order. अच्छा तो Vatsaraj 775 to 800 AD, early Gujjar Pratihar king, succeeded Nagbhat first, fought against Dharmpal and Rashtkut. Nagbhat, second grandson of Nagbhat first, re-established Pratihar power 800 to 833 AD. Mahendrapal first 885 to 910, son of Mihir Bhoj, continued expansion. Mahipal first 912 to 944 AD, successor of Mahendrapal. Each played a role in resisting Rashtkut, expanding territory and protecting Kannauj. Which of the following ruler does not belong to Gujjar Pratihar dynasty? Bharatra Bhatt first, Nagbhat second, prominent Gujjar Pratihar king. Mahendrapal first, son of Mihir Bhoj, ruled from Kannauj. Devpal, though often confused, he was a Pratihara ruler, briefly 948 to 949 AD. Bharat Bhatt first, not reliable. देवपाल, नागभट्ट, देवपाल, महेंद्रपाल, ये लोग क्या थे? प्रतिहारा रूलर थे. भरत भट्ट फर्स्ट जो थे ये मतलब ऐसे इनका कोई वो नहीं हुआ. द अरब ट्रेवलर सुलेमान विजिटेड इंडिया इन द रेन ऑफ प्रतिहार किंग भोज फर्स्ट. अच्छा एक बार ये देख लिया जाए. अल मसूदी ने इनको मिहिर भोज को क्या कहा था? किंग बौरा. और फिर दूसरे अरब ट्रेवलर की बात हो रही है सुलेमान की. वो कब आए थे? किस प्रतिहार किंग के टाइम आए थे? तो भोज फर्स्ट के टाइम. मिहिर भोज नोन एज भोज फर्स्ट. अच्छा. रूल द टाइम अरब ट्रेवलर सुलेमान विजिटेड इंडिया 851 AD. Suleiman praised the military might and justice of Gujjar Pratihar, called their territory Al-Jurj, and the king Bora. Adivara Bhoj title. Al-Masudi या सुलेमान एक ही हैं. Nagbhat first and second ruled earlier. Vatsaraj, predecessor of Bhoj first. The great Jain scholar Hemchandra adorned the court of Kumarpal. Hemchandra, eminent Jain scholar, gained fame during the reign of Jaisim Siddharaj Solanki dynasty, but became chief advisor of the successor Kumarpal. Kumarpal converted to Jainism under Hemchandra influence, resulting religious tolerance and temple building. Okay, among wars Rashtkut ruler Jain patron. Jaisim Siddharaj, earlier patron but Hemchandra advisor role flourished under Kumarpal. Vidyadhar Chandel ruler, no connection with Hemchandra. Who among the following is credited with initiating a new Samvat? Lakshman Sen. 1178 to 1206 AD, Sen dynasty king of Bengal. He introduced Lakshman Samvat, a calendar era. He was last powerful Hindu ruler of Bengal before Bakhtiyar Khilji's invasion. धर्मपाल विक्रमशिला के लिए और सोमपुरा के लिए जाने जाते हैं. देवपाल बुद्धिस्ट. विजय सेन सेन रूलर. Lakshman Sen era was started by which of the following dynasty? Sen dynasty ruled Bengal during 12th century. Lakshman Samvat was introduced by Lakshman Sen. It signified administrative sophistication and cultural assertion before Islamic conquest. ठीक.
Who among the following were famous jurists in medieval India? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूतवाहन. विज्ञानेश्वर wrote मिताक्षर, a key legal text of Hindu personal law. मिताक्षर वही वाला मामला है कि पिता के जीवित रहते हुए भी जो संपत्ति हो सकती है वो पुत्र की हो सकती है, लेकिन सिर्फ पुत्र की ही होगी. हिमाद्री यादव मिनिस्टर कंपाइल्ड लीगल डाइजेस्ट लाइक चतुर्वर्ग चिंतामणि. जीमूतवाहन रॉड दयाभाग फॉलोड इन बंगाल. दयाभाग. राजशेखर जूरिस्ट नहीं, ये पोएट, ड्रामेटिस्ट, ऑथर. काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी इन्होंने लिखा. ओके. द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट राजशेखर वाज इन कोटा महिपाल एंड महेंद्रपाल फर्स्ट. महेंद्रपाल और महिपाल फर्स्ट. Rajshekhar, 9th to 10th century court poet of Gujjar Pratihar, served both Mahendrapal and Mahipal first and his son Mahipal first. Authored राजशेखर ने क्या क्या लिखा? काव्य मीमांसा ऑन लिटरेरी थ्योरी, कर्पूर मंजरी प्रकृति ड्रामा, भुवन कोश, बाल रामायण एंड अदर्स. ठीक है. राजा भोज, ये पैटर्न ऑफ संस्कृत बट लीव 11th सेंचुरी आफ्टर राजशेखर. ठीक है. अरब ट्रेवलर सुलेमान और अलमसूदी वाइटल फॉर अंडरस्टैंड, ये दोनों लोग मिहिर भोज के टाइम आए थे. प्रतिहारा कैपिटल वाज कन्नौज. स्पेशली ड्यूरिंग मिहिर भोज रूल द सिटी बिकेम सेंट्रल टू रिपैट्रिएट पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटा में लड़ाई. चोला तंजावुर वाज मेड विजयाला चोला was made capital by Vijayala Chola in 9th century. Parmar Malwa with Dhar as capital. King Bhoj built temples and famous Bhojshala here. Solanki Chalukya ruled Gujarat. Capital was Anhilwad Patan established by Moolraj first. मूलराज फर्स्ट ने इसको वो किया था. विच कंसिडर द फॉलोइंग पेयर. नन्नुका चंडेला सही है. नन्नुक चंडेला. जय शक्ति परमार सही है. नहीं गलत है. चंडेला किंग थे ये. जय शक्ति. नागभट्ट सेकेंड. प्रतिहारा ग्रैंडसन ऑफ नागभट्ट फर्स्ट. 800 to 833 सी में. भोज राष्ट्रकूट नहीं, परमार किंग थे. ठीक है. द गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय नागभट्ट फर्स्ट. नन्नुक चंडेला थे फाउंडर ऑफ चंडेला डायनेस्टी. नन्नुक जो है चंडेला डायनेस्टी के फाउंडर थे. जय शक्ति अभी चंडेला किंग थे. नागभट्ट सेकेंड ये क्या थे, मतलब हाँ प्रतिहारा थे. भोज परमार किंग थे. नागभट्ट फर्स्ट फाउंडर ऑफ गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी. फॉट अगेंस्ट अरब इन्वेजन. बैटल विद अरब नियर राजस्थान. नागभट्ट. मेंशन्ड इन द ग्वालियर इंस्क्रिप्शन एंड ऐहोल इंस्क्रिप्शन बाय पुलकेशिन सेकेंड. सही है. वत्सराज सक्सेसर थे एक्सपेंडेड प्रतिहार रूलर. हर्षवर्धन फ्रॉम पुष्यभुक्ति डायनेस्टी. रिलेटेड अनरिलेटेड. हर्षवर्धन जो थे पुष्यभुक्ति डायनेस्टी के थे. ठीक है. पुष्यभूति. मिहिर भोज मोस्ट पॉपुलर प्रतिहार किंग. Which were the three dynasties engaged in tripartite struggle of Kannauj? तो पाल गुज्जर पाल प्रतिहार गुज्जर और राष्ट्रकूटा. हाँ ये भी कह सकते हैं कि गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी. ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल रिफर्स टू 8th-9th century contest over कन्नौज. पाल डायनेस्टी ईस्टर्न इंडिया बंगाल बिहार गुजरात. प्रतिहार डायनेस्टी सेंट्रल एंड नॉर्थर्न इंडिया. राष्ट्रकूट डायनेस्टी डेक्कन.
The triangular fight for political supremacy is a landmark in early medieval Indian history. Chola were southern ruler Tamil Nadu. Who among the following was not part of tripartite struggle? तो कौन कौन थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट. चोला नहीं थे, चोला साउथ के थे. Chola emerged as prominent under Vijayala in 9th century in Tamil Nadu. Their ambition were south-centric, focusing on Tamilkam, not Kannauj. Mahodaya is an old name of Kannauj. Mahodaya is an old name of Kannauj. Kannauj is referred as Mahodaya and Kanekuch. In ancient time, it rose a prominence under Hers and became a prize for control during tripartite struggle during Gujjar Pratihar under Mihir Bhoj. Allahabad, ancient Prayag, Khajuraho, Chandela capital, Patna, ancient Patliputra. Which of the following is known as Nagar Mahodaya? तो नगर महोदय कान्य कुब्ज किसको? कन्नौज को कहा जाता है. नगर महोदय श्री is glorified title for Kannauj during Mihir Bhoj reign. Reflect its economic, religious and political significance in early medieval India. महोबा चंडेला region था, linked to Alauddin Campilya, ancient city, मथुरा religious center. चंडेला डायनेस्टी नन्नुक ने फाउंड किया था, फेमस फॉर खजुराहो टेम्पल, कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था. डायनेस्टिक कैपिटल कन्नौज, धर, अनहेवाल, तंजौर. अच्छा अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जिजभुक्ति कौशाम्बी नहीं भाई, ये अपना बुंदेलखंड है. कोइल अलीगढ़, द ओल्ड नेम ऑफ अलीगढ़ इन अर्ली मिडिवल टेक्स्ट was कोइल. महोत्सव नगर महोबा, महोबा was referred as महोत्सव नगर. कोइल को अलीगढ़ कहा जाता था. अंडर चंदेला, महोदय श्री कन्नौज. महोदय या महोदय श्री was glorified name of Kannauj during Pratihar period. Jejbhukti Bundelkhand. Jejbhukti comes from Jejak, a Chandel ruler. Kaushambi was prominent during Mauryan and later Gupta period. Kaushambi. Which among the following Rashtrakoot king defeated Pratihar under Nagfast II? Govind III. Govind III, 793 to 814 CE. Most successful Rashtrakoot king after Dhruv. He invaded North India and defeated Nagbhat II, Gujjar Pratihar, as recorded in Sanjan and Radhanpur inscription. Nagbhat II was forced to flee Kannauj, showing Rashtrakoot superiority. ध्रुव जो थे वो गोविंद III के पिताजी थे. डिफीटेड धर्मपाल, इन्होंने धर्मपाल को हराया था. पाल किंग. इंद्र III के मच लेटर नोन फॉर प्लंडरिंग कन्नौज. कृष्ण III ruled the 10th century campaigned in Chola territory, not against Nag. Okay, who among the following granted financial aid for restoration of demolished mosque at Kambhat? जयसिंह सिद्धराज ने, मतलब मस्जिद जो वो थी उसको पैसा दिया. जयसिंह सिद्धराज 194 to 1094 to 114 सोलंकी किंग ऑफ गुजरात. डिस्क्राइब्ड इन मोहम्मद ऑफिस पर्सियन वर्क. ग्रांटेड 1 लाख बलम करेंसी फॉर रिबिल्डिंग मॉस्क्यू एट खंभत, कॉम्बे, गल्फ ऑफ कॉम्बे या गल्फ ऑफ खंभत, शोइंग रिलीजियस टॉलरेंस. चमुंदराय होयसाला मिनिस्टर बिल्ड गोमतेश्वर स्टैचू. कुमारपाल सक्सेसर ऑफ जय सिंह. महिपाल देव लाइकली. अच्छा, हु वाज द फाउंडर ऑफ परमारा डायनेस्टी? तो परमार डायनेस्टी इज फाउंडेड इन 9th century CE बाई उपेंद्र या कृष्णराज अंडर राष्ट्रकूट सुजेरैनिटी. कैपिटल वाज धर, later ruled by King Bhoj. Kanakpal was mistakenly accepted by commission. He was unrelated to Parmar. अजयपाल, कनकराव, जगतपाल. तो किसने वो किया था? उपेंद्र या कृष्णराज ने, मतलब
फाउंडेशन रखा था परमार किंग का। King Bhoj ruled over Dhar. Bhoj, the most illustrative Parmar ruler, initially ruled from Ujjain, later shifted capital to Dhar, known for administrative, architectural, and literary achievements. आद्यधार नीरधार नीललंब सरस्वती पंडित कांडती के सर्वे भोज राज दिवंगते. Without Bhoj, Dhar lost support. Saraswati became anchorless and scholars were directionless. मतलब राजा भोज इतने मतलब महान थे. पहले उज्जैन था लेकिन बाद में धर कैपिटल बना. Who among the following wrote the book on artificial scientific equipment? भोज, राजा भोज. Bhoj wrote Samarangana Sutradhar, a treatise on architecture, engineering, and mechanical devices. Chapter describes yantra machines like robotic device, flying machines, viman, and mechanical temples. So he also authored Siddhant Sangrah, astronomy, Raj Martand, योग सूत्र, वृत्ति, करुचार, फिलॉसफी, युक्तिका पलतारू, लॉजिक. गोविंदाचार्य क्या करते थे? कमेंटेटर ऑफ रामायण. चंद्रवर्मा महिपाल नहीं. द प्रिसाइडिंग डाइटी ऑफ भोजशाला टेम्पल इज गॉडेस सरस्वती. भोजशाला इन धार मध्य प्रदेश वॉज एस्टेब्लिश्ड ए संस्कृत स्कूल बाई राजा भोज, dedicated to goddess Saraswati, the deity of learning. Archaeological finding confirm ideal inscription of Sarada, माता शारदा यानी कि सरस्वती. जय सिंह सिद्धराज, इन्होंने मंदिर को मतलब मस्जिद को पैसा दिए री इनोवेट करवाने के लिए. भोज रिनेसेंस मोनार्च. राष्ट्रकूट परिहार कन्फ्लिक्ट, कन्नौज महोदय श्री. Who among the following was not king of Parmar dynasty? तो गंगदेव परमार डायनेस्टी के नहीं थे. गंगदेव was a कालाचुरी king, not Parmar. He ruled from Tripuri and assumed the title विक्रमादित्य. गंगदेव त्रिपुरी से राज करते थे. इश्यूड गोल्ड कॉइन्स एंड रेसिस्टेड फॉरेन इनकर्शंस. उपेंद्र परमार डायनेस्टी के फाउंडर थे. मुंज या वाकपति राज, परमार रूलर बिफोर किंग भोज. उदयादित्य सक्सेसर ऑफ भोज कंटिन्यूड परमार लेगेसी. Who among the following Arab writers gave the description of Kala Churi, ruler Gangadev and his capital Tripuri? Al-Baruni ने बोला था. Al-Baruni 973 to 148 AD, a Persian polymath, visited India with Muhammad Ghazani, authored Kitab al-Hind, where he described Gangadev and the Kala Churi capital Tripuri near Jabalpur. ठीक है. Al-Bahri, lesser known. Al-Masudi visited India earlier, प्रतिहारा पर भोज राजा भोज के टाइम में. इब्न बतूता मोरक्कन ट्रेवलर, मोहम्मद बिन तुगलक के रीन में आया था. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, फेमस प्लेसेस और रीजन्स. अरे and more ancient cities with cultural like Baghelkhand, Mandolkar. अच्छा आगे देखा जाए. The author of Godavaho was Vakpati. Vakpati was a court poet of Yashovarman of Kannauj. Wrote Godavaho, slaying of Gauda king. Godavaho, Vakpati.
संस्कृत महाकाव्य प्रेजिंग हिज पैट्रन्स विक्ट्री और गौदा बंगाल. वाकपति was court poet of Yashovarman of Kannauj. Wrote Gauda Vaho, slaying of Gauda king. Harishen, court poet of Samudragupta, wrote Allahabad pillar inscription. Harishen, court poet of Samudragupta, wrote Allahabad pillar inscription. Aryabhatta, mathematician. Banbhatt wrote Harshcharitra for Harshvardhan. What does the term Arghat refer to medieval Indian economy? Water wheel used for irrigation. Water wheel, Arghat. Arghat, a Persian water lifting device operated by bullocks or camels, used to draw water from well for irrigation, mentioned in Panchatantra and Rajaratrangini. Bonded labor known as Vitti or Begari. Land grant Aghara Brahmadev Devdan. Wasteland to farmland called Vasti. Which Sultan was known as Akbar of Kashmir? To Sultan Zainul Abidin, called Badshah, known for religious tolerance, promotion of art, learning, architecture, and Persian literature. Like Akbar, he supported multi-religious harmony, called Akbar of Kashmir. Shamsuddin Qutbuddin Sikandar, earlier Sultan. Sikandar Butsi Khan was known for destruction of Hindu temple, opposite of Zainul Abidin. Who was the original name of Zainul Abidin? शाही खान. जैन उल अब्दीन का नाम क्या था? शाही खान था ओरिजिनली. Shahi Khan was original name of Zainul Abidin. Before ascending the throne of Kashmir, son of Ali Shah, became king in 1420 AD. Ali Shah, his father, who was the founder of Karnataka dynasty, Nanya Dev. Nanya Dev 1097 to 1147 AD, founder of Karnataka dynasty in Mithila region, Bihar. Nanya Dev. Simaurangarh ruled Tirhut region after Pal decline. ठीक है. नरसिंह देव, विजय देव, हरिदेव, नॉट फाउंडर ऑफ कर्नाटक. नन्या देव ने कर्नाटक का फाउंडेशन किया. हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी? हरसिम्हा. 1295 to 1324 AD, last ruler of Karnataka dynasty, known for supporting literature and arts. He started the Panji system, a genealogical record system in Mithila. Panji system. Information about which king is found in Kuruspal inscription? Someshwar first. Kuruspal in Bastar, Chhattisgarh, has inscription of Nagvansh ruler Someshwar first. Kuruspal stone inscription mention land grants by Someshwar Dev. Kuruspal tank inscription Queen Dharna Mahadevi. Dharna Mahadevi made land grants to god Shiv Kameshwar. ठीक है. बोध गया बिहार. खजुराहो बुंदेलखंड. शिरडी महाराष्ट्र. नासिक महाराष्ट्र. तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश. सही है. ठीक, तो ये हम लोग का भी अब ये ख़त्म होता है एंशिएंट हिस्ट्री. थैंक यू, बाय बाय.